Hello, everyone. I hope I am audible and visible. I think everything seems to be fine. Yes, everything is fine. Just a minute. Sorry for low energy. थोड़ी सी सर्दी है. I have a cold, so I hope you guys won't mind. So let's start discussing what were the things that were in news last day. So सबसे पहले जो American rescue mission था. Right, that was in news. I mean, the way things get out of matlab, what we can say regular order, the way things get into this. Bhai Sahab, Top Gun Maverick Part 3 confirmed. Yes, so F-13, F-15 E, that was lost. है ना? There were two particular crew members that ejected. One of them was pilot, another one was the weapon officer. The pilot was rescued instantly, but the weapon officer was missing, and he was hiding in one of the caves with one of the particular, what we can say, radio, है ना? And he was transmitting a radio signal on the regular basis, like after every some hours, and the satellite connectivity was recording its location. He was not supposed to continuously, what we can say, रिलीज द सिग्नल और द रेडार विल कैच इट तो उससे काफी प्रॉब्लम हो सकती थी सो एक बहुत ही क्रिटिकल तरीके से उस पर्टिकुलर मिशन को एग्जीक्यूट किया गया एंड देयर वर C-15s, there were some SEALs. Yes, those SEAL commandos which killed Osama bin Laden, right, a few years back in our friendly neighborhood Pakistan. Those American Rangers, those what we can say, advanced data forces, all of them were involved just to rescue one particular person. And then comes the two-side story, one from USA and another from Iran. Hello, Rishparna. Good morning. So, USA mentioned about this particular mission in such a fashion कि ये एक excessively strong and excessively successful mission रहा, while Iran is claiming that that was not just a rescue mission. They wanted to go for our nuclear, what we can say, fuel, the enriched uranium from Abshan. They wanted to create a station over there, but they were unsuccessful. और उनको क्या किया गया? हमने shot down किया. Undoubtedly, US lost approximate 500 to 700 million dollars of worth of planes, right, in this rescue mission. But they rescued their pilot, that is the weapon officer of F-15E, right? Iran, apni taraf se, they are claiming some different thing. It was a kind of raid mission, not rescue mission. And they also mentioned about how the number of troops, number of what we can say, flying vehicle were involved into one particular rescue mission were not supposed to be there. So वो ये बताना चाहते थे कि जो अफशान के आसपास न्यूक्लियर फ्यूल है ये उनको कैप्चर करने आया था दे वांटेड टू क्रिएट अ स्टेशन ओवर हियर बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे सो इट वाज अ ड्रामेटिक इवेंट यस्टरडे पूरे दिन चर्चा में रहा ट्विटर में तो काफी पब्लिक मजे ले रही थी and then the way things happen, right, everybody was saying same thing. This is a very good film script, you can make a very good film out of it. Yeah, this was the most talk topic tomorrow. Yesterday, sorry. And Raghav Chadha was also one of the talk topic. Then come the Bengal SIR and some other particular thing. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की, जो आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट है. सो फ्रंट पेज पे आपको देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल SIR एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द पेंडिंग केसेस. यस सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कह दिया कि भाई साहब जो इलेक्टोरल रोल है जो वोटर लिस्ट होगी दैट इज सपोज टू बी फ्रीज्ड नाउ बिकॉज वी हैव टू कंडक्ट इलेक्शन the other particular part right for example there are people who did not get their name in the electoral roll they can go to the tribunal and they can process their name but ठीक है for this particular election we have to freeze the election sorry electoral roll because election is near so इस पे हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या है क्या नहीं है तो इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं है ना
फिर एक अनदर पर्टिकुलर न्यूज है विच इज दिस, वो भी फ्रंट पेज पे है, एंड दिस इज अ वेरी क्रिटिकल न्यूज। क्लैट वालों एकदम शांति से इस पर्टिकुलर न्यूज को फॉलो कर लेना। दैट इज कस्टोडियल डेथ इन तमिलनाडु। इसको अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो किस तरीके से तमिलनाडु पुलिस ने कस्टोडियल डेथ जो है वो उसको अंजाम दिया था, एंड उसके बाद किस तरीके से उसका जजमेंट आया। देयर वर 15 what we can say policemen who were accused, out of which 9 were awarded with the death penalty for custodial torture and murder. राइट, यस, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन माना जाता है ये। द पुलिस अकाउंटेबिलिटी, द क्रिमिनल सिस्टम, द डेथ पेनल्टी, स्टेट एक्टर्स, कई ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जिस पे डिबेट डिस्कशन अब चालू हो चुका है, एंड स्पेशली द पुलिस व्हाट वी कैन से टॉर्चर। राइट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास के लिए, तो हम इसको भी अलग से डिस्कस करेंगे। बट दिस वाज इन फ्रंट न्यूज, मतलब फ्रंट पेज तुम्हें वो करना ही है। And the next one is NCRT and judiciary. My lord, ये पर्टिकुलर टॉपिक थमता हुआ नहीं दिख रहा है। यस, मतलब ऐसा नहीं है कि अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। द थिंग इज कि देयर इज एन एकेडमिक अप्रोच फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ओवर द टेक्स्ट बुक कंटेंट इशू। देयर वर थ्री राइटर्स जिनको असाइन किया गया है टू राइट डाउन द बुक and to like what we can say, uh, kill that chapter and rewrite in a different fashion, right? तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांगली प्रैक्टिस किया जा रहा है। There is a question about academic freedom, right? Yes, the question is quite simple. In the academics, we are supposed to teach everything transparently, right? So, the way Supreme Court reacted on that NCRT Class 8 social science issue, right? The chapter was simply the corruption in judiciary, राइट। और उनका ये मानना था कि दिस इज एक्चुअली पुटिंग जुडिशरी इनटू द नेगेटिव फेम, कि जुडिशरी बहुत सारा करप्शन है। सो क्या नहीं है, कैन यू गिव अ गारंटी टू एवरी पर्टिकुलर पर्सन दैट देयर इज नो करप्शन इन जुडिशरी? आई मीन अभी जस्टिस वर्मा का केस चालू है ना। सो देर आर अ लॉट ऑफ डिस्कशन कि एकेडमिक फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है ओवर द जुडिशियल रिव्यू। बट ठीक है, अब माय लॉर्ड है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अनदर न्यूज। ये भी फ्रंट पेज पे ही है। फिर जो वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल, और मोर प्रिसाइजली नारी शक्ति अभिनंदन वंदन अधिनियम, राइट? या दैट्स द नेम आवर गवर्नमेंट इज हैज गिवन, द नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। सो 2023 के स्पेशल सेशन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था, एंड दिस वाज द सेशन, दिस वाज द लॉ that was making a compulsory 33% reservation for the women in the Lok Sabha and state legislative assemblies. For now, there is an election of 5 states, right? And there are politicians who are using this particular bill as a leverage कि भाई हमने ये भी करके दिखाया, हमने वो भी करके दिखाया, जबकि सेंट्रल का वो है, right? So, for now, the debate is कि even if you are taking the credit, this is supposed to be implemented after census, after delimitation. तो उस पे भी एक डिबेट चल रही थी कंटिन्यूअसली। फिर बात करें दैट ईरान इसराइल अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट की, इस पे भी थोड़ा सा अपडेट लेंगे, क्योंकि भैया ट्रम्प की डेडलाइन जो है आज खत्म होने वाली है। ठीक है। चाइना, वन ऑफ द गुड न्यूज इज चाइना जो है वो चाहता है कि हम भाई मीडिएशन करें, ऐसा वैसा ये वो। तो ये भी पर्टिकुलर न्यूज है आज के उसमें। अब उसके अलावा ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर वो नहीं था जो व्हाट वी कैन से मेजर उसमें था, एसआईआर वाला ही इशू था। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो एक एक करके हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेस्ट बंगाल एसआईआर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वोटर राइट का केस है। सो वेस्ट बंगाल एसआईआर एंड करंट स्टेटस। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज हैपनिंग। थोड़ा न्यूज में चले जाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। द कोर्ट सेज ट्रिब्यूनल हियरिंग कुड नॉट बी कम like compressed to fit a preconceived deadline. Right. CGI says the blockade of judicial officer in the Malda were well planned and deeply instigated move. Logical discrepancies are peculiar to Bengal, promoting the judicial officer.
Court says. So what exactly is happening? कि भैया SIR हुआ वेस्ट बंगाल में, right? And there were a lot of logical discrepancies. Now, logical discrepancies is quite simple that somebody's name is not on the list because of some logical reasons. For example, if somebody's name is pronounced wrong, for example, Mamta Didi, Mamta Banerjee was the Chief Minister of West Bengal. In our Hindi heartland, Central India and Northern India, उन्हें ममता बनर्जी बुलाया जाता है. While in Bengal, she can be called as Momita Banerjee. Right. So they used AI as a tool to fill the data and other things. So when they are saying Momita Banerjee, they don't get the name matched with the documentation and their name is being cut down from the SIR. So ऐसे बहुत सारे cases थे approximate जो particular total pending cases थे those were 60 lakh. So 60 lakh people were those which whose name was not in the a supplementary voter list or supplementary electoral roll due to logical discrepancy. Now, this is a huge number. Okay, to solve this problem, the Supreme Court decided to create a tribunal. And the people were supposed to go to tribunal. They were supposed to submit document. They were supposed to resolve their logical discrepancy. This was a simple process. But the number was huge. और इसके बारे में काम कहाँ से स्टार्ट हुआ 30 जनवरी से वोटिंग कब है 23 अप्रैल के आसपास एंड उसका रिजल्ट कब आना है 9 मई को सो इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम जिसमें ये सारे के सारे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जो है उनको क्या करना है सॉल्व करना है इस ट्रिब्यूनल को ओके सो देयर वर डिस्कशन की क्या हमारे वोटर राइट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे क्या हमारे दूसरी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी बट ओवरऑल फैशन में अब उस पर एक स्पेसिफिक जजमेंट एंड स्पेसिफिक डिस्कशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने करके दिया राइट तो जो बेंच थी उसमें हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत थे जयमाला बागची थे और विपुल पांचोली थे तो तीन लोगों की बेंच ने एक स्पेसिफिक डेटा जो है उसकी बात कर ली है ना जिसमें 60 लाख के आसपास टोटल पेंडिंग केसेस थे राइट एंड 40 लाख वर एनालाइज्ड केसेस 50% इंक्लूजन एंड 45% एक्सक्लूजन के साथ 20 लाख पीपल आर स्टिल देयर जिनका अभी भी नाम जो है वो डायरेक्टली उसमें नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है सो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है हम उसकी बात करें तो कोर्ट ने क्या क्या रिफ्यूज किया हुआ सो कोर्ट रिफ्यूज एक्सटेंडेड वोटर लिस्ट फ्रीजिंग सो दे रिफ्यूज टू एक्सटेंड the voter list freezing. Yes, because this is ki there is a strong particular election vibe that is going on, and the preparation are being done. If we will freeze the voting list, then it can create a chaos in the election. Second thing, they refuse to grant interim protection to excluded voters. So there were several voters which were excluded. They said कि we are not going to provide any interim protection to them. राइट दैट्स कम्प्लीटली फाइन कि एक वोट में एक पर्टिकुलर उसमें क्या कहना चाहिए इलेक्शन में आपने वोट नहीं किया दो दिस इज वोटर्स राइट वायलेशन बट ठीक है अब मसला ये है कि दोस पीपल हु वर एक्चुअली बिलोंगिंग टू रॉयल फैमिलीज फॉर एग्जांपल द नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली there were 300 members whose name were cut from the voter list how why that is something जिसको कोई वो नहीं है right. And third thing, this is कि we cannot fix any deadline for the क्या कहना चाहिए appellate tribunal. Right? उन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया कि to avoid the chaos due to large number of appeal, we refuse to extend the freeze of a voter list. Right? हाँ शायद they refuse to extend the interim protection to excluded voter and they also refuse to fix any deadline for the appellate tribunal उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि this can create a chaos अब जो डेडलाइन के हिसाब से काम था वो ये था कि जो इलेक्टोरल रोल फ्रीज होने थे कि मतलब अब फाइनल जो वोटर लिस्ट है जिसको फाइनलाइज करना था दैट वाज कि फेज वन जो था वो 6 अप्रैल यानी यस्टरडे कंप्लीट हो गया है फेज टू का जो पर्टिकुलर अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद नई लिस्ट बनेगी वो 9 अप्रैल को फ्रीज जाएगी उसके बाद कोई भी एक्सटेंडेड वोटर लिस्ट या कोई भी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट नहीं होगा दैट मीन्स कि 9 अप्रैल के पहले आपका केस सुलझ जाता है देन कंप्लीटली फाइन नहीं तो फिर उसको रेगुलरली चलने वाली हियरिंग्स में जाएंगे ठीक है प्रॉब्लम क्या है
Right. So when appellate tribunal began working, there were seven lakh cases that were already being presented in front of the tribunal, right? And there were 19 appellate tribunals जिनको construct किया गया था, and this is a huge number of cases जो वो जाके सुनेंगे. इनका डायरेक्शन बड़ा सिंपल था. Formation of a three-member panel of former judges, ensure the uniform procedure of verifying the document, tribunals to work independently to examine the voter records and some other particular documents so that they can properly क्या कर सकते हैं create a voter list. ये सारी चीजें होने के बाद की कहानी ये है कि जो इश्यूज है जो कोर्ट ने खुद हाईलाइट किए हैं, राइट, दे वर लाइक कि ई सिग्नेचर का अपहोल्ड हो या इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, राइट, लाख ऑफ फॉर द रीजन ऑफ रिजेक्शंस हो. यस, देयर आर लाख फॉर द रीजन ऑफ रिजेक्शन कि उनको रीजन नहीं मिल रहा कि क्यों रिजेक्ट किया गया था, राइट. एंड पोर्टल जो है फॉर द ई सिग्नेचर उन्होंने बोला 7th ऑफ अप्रैल तक ही ओपन है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डिस्पोज दीस थिंग. सो ओवरऑल फैशन में ये पर्टिकुलर केस जो है थोड़ा सा फंस गया है. अब एक टाइमलाइन पे जाते हैं कि बंगाल एसआईआर लास्ट ईयर जो है क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था. फ्रॉम देन ऑनवर्ड, वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द स्टेट दैट इज हैविंग द मोस्ट chaotic incident that is happening under the name of SIR. The government versus Election Commission of India. There were the cases of the polling booth, those officers जो BLO level पे काम कर रहे थे. There were the issues of Mamata Banerjee versus the administration, and काफी सारी चीजें हुई हैं for which this particular things were was in news. Ultimately, we are at the end of that kind of process जहाँ majority of voters with the logical and non-logical discrepancies उनकी सारी problem solve हो जाएगी. हाँ, कुछ तो ऐसे होंगे जिनका नाम नहीं ऐड हो पाएगा, that is for sure. तो let's hope for the best कि एक अच्छा fair election देखने को मिले, which seems to be a bit a problem in the West Bengal क्योंकि West Bengal is known for election violence, aggressive approach on election and a lot of different things. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हम ये कह सकते हैं. खैर, लेट्स डिस्कस द तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ केस. एनीबडी व्हाट इज अ कस्टोडियल डेथ? So, whenever somebody is being arrested, right, an arrested person has all the fundamental rights जो भी constitution में defined है. So, they were not supposed to torture, they are not supposed to be beaten by police personnel, right, and they were supposed to be getting a dignified life over there. So, ये सारी चीजों को violate करना जो है वो custodial torture कहलाता है. ठीक है. So अब हम बात कर लेते हैं न्यूज की स्ट्रिक्टली. So in a landmark verdict on the April 6, the Madurai court awarded death sentence to nine policemen. Right, death sentence to nine policemen for the custodial torture and murder of a father-son duo, जिसमें पी जयराज और जे बैनिक्स थे. यस, सो दे वर फादर सन ड्यू जिनको इन्होंने अरेस्ट किया था, एंड अरेस्ट के बाद इनके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर किया, एंड अल्टीमेटली दे वर डाइड. रीजन क्या था, व्हाई दे वर अरेस्टेड? I mean, if you will keep listening to these things, you will feel like, dude, what the hell is going on? So it was June 2020, right? And you know what was happening in the June 2020. You, me, and everybody was inside the home. We were not allowed to go out because of COVID restrictions and all. June was the same time when लेट सुशांत सिंह राजपूत जो है उनकी लाइफ वी लॉस्ट हिम, राइट. सो वहां पे ये स्टोरी स्टार्ट होती है. जून 2020 in the town of Satakulam, Thuthukudi district become a symbol of police brutality India after the two traders died within the days in taken into the custody. So अब एक एक करके मैं बताता हूँ कि क्या हुआ. So a 50-year-old father, that is P Jayaraj, right? And 31-year-old son, that is J. Banix. And they were arrested for allegedly violating the COVID-19 lockdown norms for keeping their mobile shop open beyond permitting hours.
सो इन दोनों को अरेस्ट किया गया था टू वायलेशन ऑफ कोविड-19 गाइडलाइन. इन्होंने the police recorded that they opened their shop after the limiting say permitting hours, right? They were in custody and two were subjected to severe physical assault and sexual torture throughout the night. So इनके physical assault के particular वो थे साइंस थे, sexual assault के साइन थे. यस. ये दोनों के दोनों जो फादर सन थे उनको क्या किया गया, फिजिकली एंड सेक्सुअली असॉल्ट किया गया पूरी रात थ्रू आउट दी नाइट. एंड देन ऑन द 22 ऑफ जून, यस, 22 ऑफ जून की बात है, व्हेन बोथ ऑफ देम right lost their life within 24 hours. So पहले जो फादर थे उनकी डेथ हुई 22 ऑफ जून को दोपहर के टाइम पे. एंड देन 22nd 23rd की रात को द सन ऑल्सो डाइड. So within 24 hours a family lost a father and a son, right, because of small violation according to police of the COVID-19 lockdown, right. After this, a nationwide outreach started. The case was transferred to the CBI, right, which filed a comprehensive charge sheet against the accused officers. तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन थी इवेंट की. सो दे वर अक्यूज कि उन्होंने परमिटिंग आवर्स की बियॉन्ड शॉप खुली रखी. एंड फॉर दैट दे हैव बीन अरेस्टेड, दे हैव बीन टॉर्चर्ड फिजिकली एंड सेक्सुअली. And after 2 days, father died on the same 24 hours time limit. The next day, the son died, right? And the family lost a father and a son. So this was happened, and it was a brutal crime, that is for sure. हम पुलिसमैन को हम पुलिस को हमारे प्रोटेक्टर की तरह देखते हैं. So even if there is a person who's accused of a crime, right, he also have some fundamental right. So and it was not a severe crime that कि आप मार्च से लेके एक अगर ह्यूमैनिटेरियन टाइमलाइन की बात करें, from March to June, there was a strong lockdown. There was a loss of business because he was not able to open their shop. So at some point, अगर उसने 1 घंटे के लिए थोड़ा ज़्यादा भी खोल ली because people were coming, the customers were coming. I don't find it a very what we can say a cruel violation of any particular guideline. और बहुत भयंकर सा heinous crime नहीं था कि उनको इतना मारा जाए कि उनकी डेथ हो जाए. So that is my personal opinion. And now let's come to court's opinion कि कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है, कोर्ट क्या कहना चाहता है, राइट. तो कोर्ट की अगर बात करें तो जो सेंटेंसिंग है उसमें जज जो थे उनमें जी मुथुकामरन थे, who was the first additional district and session court magistrate, right. He sentenced all 9 convicted police personnel to death, describing the incident as a rarest of the rare case and a clear abuse of authority. So कोर्ट ने इसको एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है, राइट. एंड इसे एक क्लियर कट अब्यूज ऑफ अथॉरिटी जो है वो भी माना है. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली मॉरली वेरी रॉन्ग. मैंने बोला पुलिस को हम जानते हैं टू लाइक व्हाई वी हैव क्रिएटेड पुलिस सिस्टम. वी नो वी वांट कि सोसाइटी को वो प्रोटेक्ट करके रखे. बट एक जनरल पर्टिकुलर चीज के लिए अगर सोसाइटी में लोगों को आप इतना मारोगे कि वो मर जाएंगे तो वो डेफिनेटली एक अब्यूज ऑफ अथॉरिटी तो देखने को मिलती ही है, राइट. सो कोर्ट ने इसको क्लियरली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम माना है. एंड दे आल्सो मेंशन दैट दिस वाज अ क्लियर कट अब्यूज ऑफ द अथॉरिटी. उन्होंने आगे मेंशन किया द सेंटेंस पर्सनल इंक्लूडिंग then Sub Inspector S. Sridhar, Sub Inspector K. Balakrishnan, and P. Raghu Ghosh, and six other like head constable and constables. They all are being sentenced to the death. Right. The court also ordered the total compensation of 1.40 crore to be paid to the convicted family, right? Sorry, convicted officers to the family, right? By like as a compensation. क्योंकि उन्होंने एक फादर और उनके फैमिली के मेजर जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल एंड मोरल सपोर्ट थे उन दोनों को छीन लिया. सो नॉट ओनली डेथ सेंटेंस बट ऑल्सो 1.40 crores of compensation was also awarded to the family, राइट. अब कुछ और कस्टोडियल डेथ के इंसिडेंट देख लेते हैं जो पिछले कुछ सालों में हुए हैं, है ना. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं अजीत कुमार केस इन 2025.
So, Madras High Court ordered an interim compensation of 25 lakhs for the family of 27-year-old temple security guard Ajit Kumar, who died in the police custody in June 2025. फिर एक और केस था, that is Muthu Karthik case, again in 2025, right? So in September 2025, four policemen were sentenced to 11 year in prison for custodial death of 17-year-old boy in 2019. Right? So उन्होंने 17-year-old boy को मारा, कूटा कि भैया उसकी डेथ हो गई. Right? And जो वो है क्या कहना चाहिए, मतलब उसको इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी डेथ हो गई. एंड 2025 में उसके उनके अगेंस्ट क्या आया, जजमेंट आया, एंड दे वर सपोज टू go for 11 years of imprisonment. Right? And there is another case in the recent years जिसमें एक जजमेंट आया, which is आकाश डेलीसन केस. मैं लिख देता हूँ इससे तुम्हें थोड़ा सा. So in the March 2026, a murder charges and the SC/ST Atrocity Act were invoked in the following death of 26-year-old Akash Delison in the Shivaganga district after alleged the police torture. So भाई साहब ये पुलिस टॉर्चर जो है वो थोड़ा सा आम होने लगा है. मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा था, मैं शेयर करना चाहता था तुम लोगों से. So I would like to share it because you guys are future lawyer. So the problem is, मतलब, again, I'm not defaming any particular film or something, but problem ये है कि majority policemen wants to become Singham-like structure. Yes, they have all the authorities. They can jump out of a car, like anything. They can hang from a helicopter and jump from the 500 feet, land safely. Then they can kill all the criminals, etc., etc. So there is a psychological impact of such kind of thing. कि भैया ये जो है वो एक हीरो है and he is doing great thing. He is killing criminal and etc. etc. But there is a procedure established by law. हर एक केस जो जुडिशरी में आता है, that becomes an exam for the existing legal system. For example, when Nirbhaya case happened, right, the accused was a juvenile. One of the major accused was a juvenile, and he was the one who did the most of the brutality with the victim. So during crime, he was a juvenile, and he was sentenced for 3 years Sudhargray. Later on, he walked away from the Sudhargray with some money and a Silai machine, sewing machine, right? Just because he can start a new life. But it actually shook the system, existing system, that we don't have a system that can actually kind of work on such a fashion कि भाई अगर कोई जुवेनाइल ने इस तरीके का हीनस क्राइम किया हो तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे. तो फिर वो गाइडलाइंस चेंज की गई. सो एवरी सिस्टम, एवरी पर्टिकुलर केस व्हिच इज गोइंग थ्रू प्रोसीजरल लॉ, राइट, या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो उससे क्या होता है कि हर एग्जिस्टिंग लॉस को चैलेंज मिलता है. देयर कैन बी चेंजेस, देयर कैन बी इंक्लूजन ऑफ न्यू लॉ, राइट, ये सारी चीजें होती हैं. बट जो कस्टोडियल डेथ है, टॉर्चर है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है, दीज आर समथिंग व्हिच आर बाईपासिंग दोस. तो इसके कारण होता ये है कि हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाता ऐसे केसेस को. तो वो जो सिंघम बनने की हर आदमी की वो होती है कि आई एम अबव द लॉ बिकॉज आई एम अ लॉमैन और आई एम अ पुलिसमैन, राइट, दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट. सो आई बिलीव कि ये नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट एक्चुअली वॉलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. आई एम नॉट सपोर्टिंग criminals, that's for sure, but I don't want any of particular, what we can say, innocent to be punished in such a way. तो ये एक एडिटोरियल में काफी कुछ लिखा हुआ था कि जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसी फिल्में डालती हैं ऑन द पुलिस पर्सनल एंड अदर थिंग, which actually make them more aggressive. कि they can act on their own behalf, they can push the boundary line, they can actually, what we can say, consider themselves as the above, above the law. So ऐसे पर्टिकुलर कई चीजें होती हैं जो उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है और वो रुकना चाहिए. Okay, so that was what the Tamil Nadu custodial death. एंड आगे चल के आप भी वकील होंगे तो आई बिलीव कि आप भी इस चीज को थोड़ा सा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि ऐसा चीज ना हो. टॉकिंग अबाउट छठवां वीक हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट. अच्छा, आज के डिस्कशन का मेन पॉइंट ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प हैज गिवन द फाइनल अल्टीमेटम, है ना,
This was the seventh ultimatum, but they are calling it final. ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है. So they have given final ultimatum of to the Iran on the Tuesday, 8 p.m. I guess Eastern Standard Time. So technically that will be 3:30 a.m. At Iran tomorrow and 5 p.m. approximate in India. 5:30 p.m. क्या है फाइनल अल्टीमेटम? That is quite simple. If the Strait of Hormuz is not reopened like this, the way it was before the war, there is going to be a huge attack on bridges and power plants of Iran, and the American president is calling it a bridge day and a power plant day. Okay, and to respond this final ultimatum, Iran has simply responded about the Strait of Hormuz that we have lost the key. हाँ भाई साहब, ये एक्चुअली जो है ये मेजर डिस्कशन पॉइंट रहा है कल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. I mean, the Britain's education minister was discussing the language of Donald Trump and saying it's not a language of a statesman. Yes, they actually said it. So let's discuss what is happening. As of April 7, 2026, right, the Asian conflict entered into a maximum pressure phase. ये writers की language में मेरी नहीं है ना. With a critical deadline looming, US President Donald Trump has set a final ultimatum to Iran to reopen the Strait of Hormuz by the 8 p.m. Eastern Standard Time zone. That is approximately 5:30 Indian Standard Time on Wednesday, or face the complete demolition of its civilian infrastructure. ये उसकी धमकी है. ये फाइनल अल्टीमेटम दिया है किसने? चाचा ट्रंप ने. राइट. एंड उसके बाद किस तरीके से हुआ क्या नहीं हुआ. Trump says uncle threat. Yes, President Trump warned that if the deadline passed without a deal, the US military will decimate every bit, every power plant in Iran within the 4 hour window. मतलब ये कहानी है कि अगर आपने 8 बजे रात को यानी सुबह 3:30 बजे के पहले अगर कोई डील नहीं की तो विद इन 4 आवर दैट इज 12 a.m. तक हम सारे ब्रिजेस सारे पावर प्लांट जो है उसको क्या करेंगे डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑल योर फॉल्ट. अब ईरान ने सिंपली है ना रिजेक्ट कर दिया है इस पर्टिकुलर स्कोप. कितने अल्टीमेटम और आएंगे एक हफ्ते से? यही एक हफ्ते से 13 days, देयर आर लाइक 2 weeks. पहले उसने 2 दिन का दिया था, फिर उसने उस टाइमलाइन को एक्सटेंड करके 6 दिन किया, फिर उसने और कुछ 10 दिन बढ़ाया बीच में. सो ओवरऑल देयर आर 13 days ऑफ अल्टीमेटम जो देखने को मिल रहा है. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि कुछ नहीं होना जाना, बिकॉज इफ दे आर गोइंग टू डू इट, और अगर ईरान ने रिटालिएट करके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ब्रिजेस वगैरह जो है वो उड़ाने शुरू कर दिए, राइट. इतना सारा पैसा लगा रखा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने अमेरिका में कि अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट छीनना मतलब निकालना शुरू कर देंगे तो अमेरिका काफी परेशान हो जाएगा. तो आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है, बट क्या कम मेंटल है. एंड द वे ही इज बीइंग इंसल्टेड अराउंड द वर्ल्ड. Yeah, it's not just the Iran who insulted Donald Trump. It's NATO friends also insulted him very simply. So हो भी सकता है कि कहीं पागल हो के वो अटैक कर भी दे. खैर, काफी चीजें हैं. Iran officially rejected the US backed 45-day ceasefire proposal mediated by Pakistan, calling it not good enough. राइट. सो जो डील जो डिप्लोमेटिक एफर्ट हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कर रहा था कि 45 days का सीज फायर कर लेते हैं तब तक डिस्कशन हो जाएगा वगैरह वगैरह, दे हैव रिजेक्टेड इट सेइंग इट्स नॉट गुड इनफ. राइट. हाँ, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान का पीस प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा? आई मीन यू फॉरगेट पाकिस्तान. व्हाट इज पाकिस्तान? है ना, इट्स अ टेररिस्ट स्टेट काइंड ऑफ थिंग. दे आर giving birth to terrorism. They are kind of promoting, they are nourishing terrorism against India. And India is one of the peaceful countries. So मेरे को नहीं लगता कि उसको करना था. क्या ठीक है, राइट.
On the other half, Iran provided the 10 point counter demand जिस पे डिस्कशन चल रहा है. अगेन भी इसमें तो नहीं, बट हाँ मैंने कुछ स्पेसिफिक सोर्स से हो गया. राइटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स दोनों ने ये चीजें रिपोर्ट की हैं कि ईरान ने अपनी कुछ डिमांड्स जो है वो बताई हुई हैं. सो तेहरान काउंटर्ड विद द 10 point प्लान डिमांडिंग a definitive end of war, total lifting of sanctions, and a joint Iranian Omani control over the Strait of Hormuz. These were some major सारी चीजें नहीं, बट ये रिपोर्ट की है किसने? न्यूयॉर्क टाइम्स ने, राइटर्स ने, कि 10 पॉइंटर्स जो है ईरान की तरफ से प्रपोज किए गए हैं, जिसमें कुछ मेजर ये है कि डेफिनेटिव एंड टू द वॉर, कि मतलब कंप्लीटली वॉर एंड होगा, कोई सीज फायर कोई ऐसा वो नहीं होगा. टोटल लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस, राइट, ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगाए गए हैं वो हटाए जाएंगे. एंड जॉइंट ईरानियन ओमान अथॉरिटी ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. राइट, तो 10 पॉइंटर्स जो है पहुंचाए गए. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा कुछ हो कि भाई दो चार पॉइंट मान के ये वॉर खत्म कर दी जाए, बट मेरे को लग नहीं रहा कैसा होना है. राइट. एंड ईरान, वो मैंने बोला वी हैव लॉस्ट द की वाला सीन जो था. तो इन अ डिफाइंड एंड मॉकिंग रिस्पॉन्स टू द डेडलाइन, Iranian official posted critically online they had lost the key to the Strait of Hormuz. So ऐसा नहीं है भाई कि अकेले मतलब ट्रम्प मजे ले रहा है. ट्रम्प इज यूजिंग बैड लैंग्वेज, दैट्स फॉर श्योर. इट्स नॉट द लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट्समैन. मतलब ऐसे लैंग्वेज द वे ही इज यूजिंग इट, रोड साइड छपरीज यूज करते हैं, राइट. तो उसका मजाक बनना तो तय था, और ईरानियन से भी मजाक बना है, अदर कंट्रीज से भी मजाक बना है. सो देर आर सम मिलिट्री ऑपरेशंस दैट इज गोइंग ऑन. सो इसराइल की तरफ से बात करें तो द आईडीएफ हैज कंफर्म्ड द massive wave of airstrike targeting the regime infrastructure in Tehran and surrounding the areas like Karaj. अब ये जो कराच का एरिया है, राइट, तेहरान का एरिया, दे ऑल आर नोन फॉर द लीडरशिप और regime infrastructure. मतलब दिस इज द प्लेस जहाँ पे लीडरशिप जो है वो रहती है, जहाँ से ये कमांड करते हैं, जहाँ से ये गवर्न करते हैं. सो ईरान इज अगेन डूइंग द सेम थिंग. रिसेंटली दे किल्ड द इंटेलिजेंस चीफ. दे also targeted Hezbollah leader, but they killed one of the leader who supports Israel. Right? So Israel abhi, not only Americans, but Israelis are also in a kind of frustrated state, and they are in kind of panic state because of two reasons. Right, reason number one, what if USA and Iran peace deal happen? Israel doesn't want USA to do a peace deal with Iran. They want complete destruction of Iran. So if something like this happen, तो Israel के लिए वो एक backfire होगा. Second thing, Israel doesn't want anyone to interfere its aggression in Lebanon, है ना. इसलिए वो ईरान वाले डिस्कशन पे ज्यादा वो नहीं हो रहे हैं, और ईरान को रेगुलरली क्या कर रहे हैं, बिजी भी रख रहे हैं, जिससे लेबनान साइड उनका ध्यान ना रहे. तो ये चीज हो सकती है. खैर, ईरानियन जो है रिस्पॉन्स वो भी काफी वो था. Iranian missile salvos, that is the new name that came into the picture. So early Tuesday, the Israel activated its air defense as Iran launched fresh ballistic missiles, some reportedly containing the cluster ammunitions, right, causing debris to fall over the central Israel and causing huge destruction of infrastructure and different casualties. कल एक न्यूज आई जिसमें इसराइल ने ये चीज कबूल की कि एक अटैक में 4 लोगों की डेथ हुई. कल की बात कर रहा हूँ. मतलब इफ देर इज अ 4 फैटेलिटी दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय इसराइल, मतलब लिख के ले लो, कम से कम 40 लोगों की डेथ हुई है. इसराइल ड्यूरिंग द वॉर टाइम, दे डोंट वांट देयर डेटा टू कम आउट. तो प्रॉब्लम तो है. आगे जो साउदियन गल्फ रीजन है ना, तो सऊदी अरेबिया में भी मतलब मिसाइल इंटरसेप्ट हुई ईरान की तरफ से. कुवैत, कतार, यूएई, राइट, हर एक कंट्री में ईरान जो है कंटिन्यूस रिटेलिएशन कर रहा है. हिजबुल्लाह जो है उसने अप्रॉक्सीमेट 44 अटैक्स लॉन्च किए ऑन द इजरायली मिलिट्री साइट्स एंड सेटलमेंट, इंक्लूडिंग इन मेतुला, हाइफा, राइट, इन अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट विद द ईरान एंड द हूथीज. सो अभी के टाइम पे जो ईरान है, जो हूथीज हैं, जो हिजबुल्लाह हैं, दे ऑल आर अटैकिंग ऑन इजराइल इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, राइट. सो उनके जो एयर डिफेंस है, दे आर नॉट वर्किंग वेरी वेल. यस, इसराइल में जो आयरन डोम एंड अदर पर्टिकुलर चीजें थी, जिसको लेके एक बहुत ज्यादा एडवांस टॉक चलती थी कि यार दिस इज समथिंग जो कि बियॉन्ड व्हाट वी कैन से डिस्ट्रक्शन है या समथिंग लाइक दिस. इससे अब धीरे धीरे करके लोगों का मन उठ चुका है. आयरन डोम स्टार्टेड फीलिंग, आई मीन
हिजबुल्ला के रॉकेट तक पहुंच रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि भैया वो इंटर लाइक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो मार्क 3 मार्क 4 की उससे जा रही है। नॉर्मल रॉकेट्स आर आल्सो बीइंग लाइक रीचिंग टू द मेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो है, इसराइल की तरफ से जो प्रॉब्लम है वो तो है ही। ग्लोबल इम्पैक्ट इज सिमिलर। एवरेज जो क्रूड ऑयल है वो $115 पर बैरल पहुंच चुकी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल हैज क्रॉस्ड $110 per barrel. Right. Indian Ministry of Petroleum and Natural Gas have noted that two LPG tanker, Green Sanvi and Green Asha, successfully crossed the strait. 16 other flagged Indian flagged vehicle जो है वो वहां पे है। So इंडिया में कुछ चीजें अच्छी आ रही हैं। दो और वेसल जो है एलपीजी लेके आ रहे हैं इंडिया में। देर आर स्टिल 16 वेसल जो कि अभी भी वहां पे हैं और धीरे धीरे वो भी निकल आएंगे। राइट। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो तो है ही है। Israel issued urgent evacuation order for the dozens of villages in the southern Lebanon, pushing the resident north of the Zaharani River. Over 1.2 million people are now displaced across the Lebanon. Same pattern the way Gaza happened. सो अब अप्रोक्सीमेट 12 लाख लेबनानी जो 12 लाख लेबनानी सिटीजन्स है दे आर बीइंग डिस्प्लेस्ड एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस व्हाट वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल दैट वी आर सीइंग। अब यूएस की तरफ से अपन ने बात कर ली थी कि एयरफोर्स जो एयरमैन है उनकी रेस्क्यू हो चुकी है। राइट। एंड जो न्यूज आई है ना, बताता हूँ। द यूएस confirmed the successful rescue of a seriously wounded colonel from the mountains of Iran using a massive fleet of 115 aircraft, right? And 115 एयरक्राफ्ट के थ्रू किया गया। सॉन इन का मतलब है कि भैया उन्होंने शपथ ली ना। यस, हाउस में शपथ फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, तुम ये न्यूज देख के कह रहे हो। ओके ओके। शरद पवार अमंग द 19 राज्यसभा मेंबर्स सॉरी। सो राज्यसभा में हर 2 साल में वन थर्ड मेंबर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, रिजाइन मतलब उनका टर्न्योर खत्म होता है, वन थर्ड न्यू इलेक्ट होते हैं। राइट। तो वो उनमें से 19 अदर्स 19 इंक्लूडिंग द शरद पवार, दे आर सॉन एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, उन्होंने शपथ ली है। ठीक है। कैजुअलिटीज की बात करें तो 15 अमेरिकन personnel were reportedly injured in an Iranian drone strike on the Ali Al Salem airbase in Kuwait overnight. So 15 ऐसे भी हैं जिनकी इंजरी भी हुई है। तो दिस वाज द लाइक ओवरऑल क्या कहना चाहिए अपडेट ऑन द दीज थ्री मेजर इश्यूज। लेट्स रिवाइज द न्यूज़पेपर वंस मोर, है ना, कि क्या है क्या नहीं है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। राइट। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर हैविंग। ब्लैकलिस्टेड एकेडमिक्स सी टॉप कोर्ट हियरिंग, है ना। सो भाई साहब तीन जो पर्टिकुलर वो है। Okay, what's your opinion about the delimitation increase of seat by RPM? I think delimitation is one of the particular process जो pending है काफी time से। And if I'll see constitutionally, this is something that we definitely need. But politically देखा जाए तो ये थोड़ा सा बीजेपी के फेवर में जाएगा। The thing is कि India is divided into North India, right, and South India majorly. The North India's population has increased significantly, while South Indians states are either having a stagnant population or there is a decrease in population. So if we after census, if we will do some delimitation and we will distribute सीट्स, तो नॉर्थ इंडिया को ज्यादा सीट्स मिलेंगी और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या करेगा, फायदा देगा, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया हिंदी हार्टलैंड जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। Right. South Indian representation will be less. So if any party is having good hold in the North Indian politics, that can make a government in मतलब central government, through central में अपना government बना सकता है without any help of South Indian state. So South Indian states are proposing this. North Indian states are like कि आवा दे। सर का ओपिनियन मैटर नहीं करता। Why are you trying so hard to get into? हाँ, ये मैंने सोचा नहीं था।
बट आई मेड अ वेरी क्लियर पॉलिटिकल ओपिनियन कि मेरा नहीं, ऐसा हो रहा है। दिस इज जस्ट न्यूज आई एम शेयरिंग, दिस इज नॉट मी, राइट। बाकी मेरा मैटर नहीं करता। पीएम, हमारे पीएम बहुत होशियार है, राइट, ही इज अ ग्रेट पर्सन, राइट। जो भी वो करेंगे अच्छा ही करेंगे हमारे देश के लिए। तो मैं तो बहुत आम आदमी हूँ, ठीक है। चलो, सो एससी डिनाइज बंगाल प्ली टू स्टे वोटर लिस्ट फ्रीज। उन्होंने मना कर दिया, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। Iranian intel chief killed in Trump's deadline loom. Right, कोई प्रॉब्लम नहीं। Nine policemen sentenced to death in Tamil Nadu murder case, custodial murder case, ये अपन ने बात कर ली। Lines grow longer as West Bengal Bengal rush to voter tribunal. Bengal voters rush to voter tribunal to get their name reinstated. अपन ने बात कर ली कि there are like uh, uh, 24 lakh cases, sorry 60 lakh cases which are pending, out of which 24 lakh ऐसे हैं जिसमें कुछ भी वो नहीं हो रहा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले केस में था। Cancel Himanta's candidature, says Congress to the Congress petition to the poll body. I don't think our government would put someone under UAPA. I hope so. नहीं नहीं, चिल करो, मुझे UAPA नहीं लगा सकते ये, है ना। I'm just sharing information with you. Chalo. Sumitra files nomination paper for the by-election, says Baramati her identity. So Sumitra Pawar, जो कि वाइफ है लेट अजीत पवार की। अजीत पवार को हमने लास्ट ईयर देखा कि सॉरी इसी साल we lost him in a plane crash. So finally for the by-poll election, like his wife Sunitra Pawar is filling her nomination, and soon she will be a official member of the state legislative assembly. Pinarayi says the poll promised fulfill, blessed claim, counter the Sathishans. So this is one of the good particular news I read in the assembly poll election, कि किसी ने तो ये बात बोली कि भैया हमने जो प्रॉमिस किए थे हमने पूरे किए हैं, राइट। नहीं, तो majority of politicians are only talking about the new promises. They are not even talking about the old promises, whether they were fulfilled or not. So this is a good thing, right? Fair. Election Commission issued directive for the political ads in the newspaper. So, Model Code of Conduct के under the Election Commission has issued a certain directive how you can provide the ads in the newspaper, political ads. Right. What if Soros is paying Shubham sir newspaper premium? Anything can happen. You never know, Bhavik. नहीं नहीं, जॉर्ज सोरोस मुझे तो पे नहीं करेगा यार, राइट। आई डोंट थिंक कि हमारी बनेगी। खैर, राहुल गांधी is creating a fuel price scare, says Amit Shah. ओके, सो अमित शाह का मानना है कि राहुल गांधी जो है फ्यूल प्राइस के लिए लोगों को डरा रहा है। एंड मेरा भी ऐसा मानना है कि फ्यूल प्राइस जो है दैट इज स्टेबल फॉर नाउ until and unless there is an election. So if before election our conflict between US, Israel and Iran is being sorted, then it's completely fine. If not, then be ready, guys. Modi hails the BJP worker battling hostile condition. Assam CM says Khera's charges are Pakistani. Like, yes, yesterday we discussed how the Congress accused Himanta Vishwa Sarma's wife, Riniki Sarma, that she is holding three other passport than Indian passport. Right. And Himanta Vishwa Sarma ने ये बात बोली कि this particular news was shared by a Pakistani social media account. So this is having a Pakistan link. काफी मजे हो रहे हैं भाई साहब। शरद पवार amongst the 18 new Rajya Sabha members to sworn in। फिर इलेक्शन चल रहा था, बढ़िया जा रहा है। ओके, सो यस्टरडे वी डिस्कस बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आने वाले हैं कहाँ पे, इंडिया, राइट। सो बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आ चुके हैं, एंड दे हैव इंडियन काउंटरपार्ट आर सपोज टू डिस्कस थिंग्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की चीजें सही डायरेक्शन में जाए। Three authors pulled up by the SC over the NCRT Chapter 6 hearing. Soros gonna give press. अरे मुझे पैसे दे दो कोई, है ना। प्रेस प्रेस तो मिलता रहेगा, और सोरोस मुझे नहीं लगता मुझे पैसे देने वाला है।
क्या ठीक है, चलो सोरोस को हटाओ, है ना। फिर मेक श्योर ये वाला थोड़ा सा तुम पढ़ना। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, एक्चुअली 7th of April. दिस इज द डे व्हेन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, was came into the establishment, right? And this is an editorial, डॉक्टर कविता अरोरा है, उन्होंने मेंटल हेल्थ पे, राइट्स, डिग्निटी, इन सारी चीजों में बहुत अच्छी बात की है। इट्स अ वेरी गुड एडिटोरियल, है ना। क्या क्या है, whether दैट इज जेंडर इक्वालिटी हो, जेंडर आइडेंटिफिकेशन हो, क्या क्या चीजें होती हैं, एंड आई थिंक ये पढ़ने लायक आर्टिकल, राइट। इलॉजिकल एक्ट्स, मालदा गेरो टू प्रोटेस्ट SIR एजुकेशन जो है वो, दैट इज करेक्ट, कि मालदा में जो SIR ऑफिसर्स थे, जो ट्रिब्यून के ऑफिसर थे, उनके घेराव किया गया, दैट इज नॉट वेलकम, डेमोक्रेसी है ये, राइट। इलीगल सैंड माइनिंग इन सेंट्रल इंडिया, है ना। ये बहुत वो था, क्या कहना चाहिए, चंबल रीजन से लेके बेतवा में बहुत सारा इलीगल माइनिंग होता है। ये उस पे है, क्लाइमेट चेंज एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। So he's talking actually sense, but in India, health is never an emergency for nation. It's an individual's emergency. हाँ, अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, तो इससे गवर्नमेंट का कोई लेन देना नहीं, ये किसका लेना देना है, मेरा अपना पर्सनल इशू है, ऐसा गवर्नमेंट मानती है। Automobile dealers turn constrictively, right, cautious as the war rages. होना भी चाहिए because supply chain disrupted है. Okay, 16 Indian flagged vessel in Persian Gulf, two LPG vessels in route to India, हम बात कर चुके हैं, right. Why India and the global south needs fossil fuel intensity metric. हाँ, ये एक अच्छा आर्टिकल है, तुम वो कर सकते हो कि भाई किस तरीके से जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य था, जो टारगेट था, and किस तरीके से ऑयल क्राइसिस जो है उसको सीधे तौर पे क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। इट्स अ गुड आर्टिकल। फिर गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर मिशन, इस पे कल बात करेंगे कि व्हाट इज द सेमीकंडक्टर मिशन, कि वो कैसे काम करेगा, गवर्नमेंट को उससे क्या फायदा होगा, इंडिया को क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें। फॉरेन न्यूज में वही चल रहा है, ईरान हैज क्लेम दैट 4 bodies are being recovered, है ना, फ्रॉम द ईरानियन स्ट्राइकर साइट। ऐसा है, feeling debris from Iranian strikes injured 6, says Kuwait ministry. Correct. Artemis 2 breaks the Apollo 13 record as a human travel farther in the space. Artemis 2 के बारे में या 3 के बारे में अपन कल बात करेंगे, मुझे आज बात करने का मन था, बट आई थॉट आई शुड होल्ड इट फॉर वन मोर डे। थोड़ा टेक्निकल पार्ट जो है वो मुझे जानना था। So it has crossed the border of Apollo 13 in 1970, and they have crossed the 4 lakh kilometer mark also, कि अब वो इंडियन अर्थ से जो है वो 4 लाख किलोमीटर दूर जा चुके हैं। At least 10 killed in Israeli airstrike near Gaza school. Israel, if Israel is attacking on some particular place, school, hospital, medical facilities, ये वो particular चीजें हैं जो रेगुलर आते हैं, right? हाँ, State of Hormuz will never return to its old state, says IRGC. जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उन्होंने बोल दिया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो क्या कहना चाहिए, वापस अपनी कंडीशन में नहीं आएगा। ट्रम्प सेज ईरान कुड बी टेकन आउट इन वन नाइट। अभी 4 घंटे का उसने बोला था कि 8 PM से 12 AM के बीच में। नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वन नाइट, दैट इज 12 आवर, राइट। धीरे से भाई जो है वापस आ जाएंगे। अच्छा, वन मोर थिंग आई टोल्ड यू, दैट मंडे है, तो ये आदमी मैनिपुलेट करने के लिए, मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए चीजें वो करेगा। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट दिस टाइम इट डिडंट हैपन। ओके, इजरायली हिट्स की पेट्रोकेमिकल टर्मिनल्स इन ईरान साउथ पास। सो इसराइल अभी भी पेट्रोकेमिकल उसमें हिट कर रहा है ईरान के, एंड ये जो है ये प्रॉब्लम करेगा। यूएस lawmaker slams blockade in the Cuba visit. दिस इज समथिंग जो अब नया चालू हुआ है कि क्यूबा में ऑयल नहीं पहुंचा रहे हैं, जिससे क्यूबा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रशियन स्ट्राइक किल्स 4 as Kyiv hits on the oil hub। और फिर उसके बाद चाइना टू शो लीडरशिप विद ईरान डिप्लोमेसी, यूएस अनइंटरेस्टेड। खैर, वो तो होगा। ईरान has lost the key after Trump's ultimatum to open the straits। एंड कल मैच नहीं हुआ, शायद बारिश वारिश हो गई थी, दो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन यस्टरडेज मैच।
क्योंकि मेरे पास काम था। खैर, क्या कह रहे हो? आई डिड द आर्टिकल अबाउट शांति एक्ट 2025। आ, शांति एक्ट एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है ना? मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो इंडिया वांट्स टू हैव इट्स क्या कहना चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी टू बी स्टेबलाइज, है ना? न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी वन ऑफ द गुड पर्टिकुलर अल्टरनेटिव, एंड स्पेशली जब हमारे पास थोरियम 90 का सबसे बड़ा रिजर्व हो एंड साथ में ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी भी हो, तो कंस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है। The act also describes the liable parties and other parties. तो ये एक लंबा चौड़ा वो होगा। लेट्स डिस्कस इट टुमारो। कल अपन शांति एक्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, मैंने नोट भी कर लिया है। सो कल अपन ये भी डिस्कस कर लेंगे। नीड दैट मीम ऑफ अरविंद केजरीवाल, तो करो ना, हम भी परेशान हो गए, तुम भी परेशान हो गए। हाँ, दैट इज ईरान और इसराइल, ईरान यूएसए के बीच में यही चल रहा है। द प्रॉब्लम इज डोनाल्ड ट्रंप अभी तक बढ़िया एंजॉय कर रहा था वेनेजुएला तक। जब से उसने ईरान में अटैक किया हुआ है तब से द अमेरिकन लोकल पब्लिक, द अमेरिकन सीनेटर्स, कांग्रेस, दे ऑल आर अगेंस्ट ट्रम्प, right? Fed Trump has expected at least NATO members will help because they followed Americans blindly into the different wars, whether that is Afghanistan war, Iraq war, or any place. But NATO also said कि चाचा बहुत हो गया तुम्हारा, right? We are not going to do this, and that is the reason Trump is highly frustrated. And उसकी लैंग्वेज से वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो उसके ऊपर पड़ रहा है वो दिख रहा है। तो है, चीजें हैं, द काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन अमेरिका, वेदर दैट इज चीफ स्टाफ को हटाने का बात हो, पीट हेग्सेथ के स्टेटमेंट्स हो, या व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से आने वाले स्टेटमेंट हो, या पॉम बैंडी को हटाने की बात चल रही है उनका हो, दिस इज एक्चुअली शोइंग कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, especially which is appointed by Trump, is not at all able to support Trump in any manner. तो वो फ्रस्ट्रेशन तुम्हें देखने को मिलेगा। क्या? दिस इज इट फॉर टुडे। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। मजे करें। आई विश यू एंड ऑल योर लव्ड वन अ गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ। कल मिलते हैं विद अ फ्रेश न्यू पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, एंड आज शाम को मिलते हैं स्टैटिक क्वेश्चन के साथ फॉर एमएससी। चलो गाइस, गुड डे, सी या।